Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome. I am Fakhr Zaman. In today's lecture, we will discuss about unit number 8, Neutral and Persuasive Messages. Lecture part 1. Course code 8410. In this unit, we will discuss neutral messages, persuasive messages, announcements and transmittals. अजीज़ तलबा व तलबात, हम बिजनेस मैसेजेस लिखते हैं ताकि हम अपने पर्पस को अचीव कर सकें। अब कामयाबी के चांस को बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले जब हम बिजनेस मैसेज को बना रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं, तो उस वक्त में हमें सबसे पहले रीडर को अपने जहन में रखना चाहिए, क्योंकि हमें जो मैसेज बनाना है वो हमें रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाना है। अब जब रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है तो उसे अपने माइंड में रखना बहुत लाजिम है। अब आप जब अपने जहन में रीडर को रखते हुए एक बिजनेस मैसेज तैयार करते हैं तो यकीनन बहुत इफेक्टिव बिजनेस मैसेज कहलाएगा। बाकी आपको और चीज़ों को भी देखना होता है कि उसमें कहीं कुछ एरर्स ना हो, गलतियां ना हो, क्योंकि अगर आपके मैसेज में गलतियां होंगी और एरर से भरपूर होगा तो यकीनन जब वो रीडर के पास जाएगा तो रीडर एक बहुत ही नेगेटिव इमेज आपके ऑर्गेनाइजेशन का बनाएगा। लिहाजा बिजनेस मैसेजेस जो हैं वो किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म के रेपुटेशन के लिए, इमेज को खूबसूरत बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है, अगर आपने बिजनेस मैसेज को निहायत खूबसूरती से तैयार किया हो। अब डिपेंड करता है, क्योंकि आप मैसेज को तैयार करने वाले हैं और आपके उसी मैसेज से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का या तो नाम अच्छा बनेगा या फिर बुरा बनेगा। अजीज साथियों, हम अपने आज के लेक्चर में आगे चलकर आपको न्यूट्रल और पॉजिटिव मैसेजेस हों या नेगेटिव मैसेजेस हों, परसुएसिव मैसेजेस हों या बाज़ औक़ात पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ पर मबनी मैसेजेस होते हैं, इनके हवाले से मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। फिल वक्त हम बिजनेस मैसेजेस के हवाले से बात कर रहे हैं कि बिजनेस मैसेजेस का क्या किरदार है। तो यकीनन इसका बहुत अहम किरदार है और अच्छा बिजनेस मैसेज जो है वो यकीनन आपको कामयाबी से हमकिनार करता है। अब अगर पॉजिटिव मैसेज हो तो उसको बनाना तो बहुत आसान काम है, क्योंकि आपको मालूम है उसमें एक अच्छी न्यूज़ है और आप रीडर को भेज रहे हैं और उसकी तरफ से आपको एक अच्छा रिस्पांस ही मौसूल होगा। लेकिन फिर भी आप ध्यान इस बात का देते हैं कि आप जो मैसेज तैयार कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, और चूंकि इसमें हालांकि पॉजिटिव मैसेज यानी गुड न्यूज़ है, लेकिन बावजूद उसके इसमें एक अच्छा इमेज झलकना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसलिए आप फिर तमाम तर एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और एक अच्छा मैसेज जो है वो तैयार करते हैं। नेगेटिव मैसेजेस की जहाँ तक बात की जाए तो अब नेगेटिव मैसेज भी बिजनेस मैसेज ही होता है, लेकिन उसमें चूंकि एक अच्छी न्यूज़ आपके पास नहीं होती देने के लिए, अब इसको बनाना बड़ा मुश्किल काम है और इसको आप तैयार करते हैं और अच्छे तरीके से आप तैयार करके भेजते हैं। अब आपको मालूम है कि नेगेटिव न्यूज़ है और रीडर की तरफ से कोई अच्छा इस पर रिस्पांस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप गुडविल को बनाने के लिए, गुडविल को मेंटेन रखने के लिए एक अच्छा मैसेज भेजते हैं, ताकि रीडर अगर पढ़े उसे नेगेटिव न्यूज़ है और उस पर उसका कोई रिएक्शन अच्छा नहीं भी है तो बहरहाल उस मैसेज को वो पढ़कर कंपनी के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक अच्छा पॉजिटिव इमेज लेकर फिरे। तो ये अब आपका कमाल है कि आप बिजनेस मैसेज को किस तरह बनाकर उन तक भेजते हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि बिजनेस मैसेज आपको ऐसा तैयार करना होता है कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ दोनों होंगी। फिर आप क्या करेंगे? उस वक्त में आपको ये करना होता है कि पहले आपको पॉजिटिव न्यूज़ देनी होती है, यानी मैसेज जब जाए तो जब पॉजिटिव न्यूज़ पड़ी तो रीडर का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, उसके बाद फिर आप आगे चलकर नेगेटिव न्यूज़ भी उसमें शामिल कर देते हैं। लेकिन चूंकि फर्स्ट इम्प्रेशन एक अच्छा पड़ा होता है और एक पॉजिटिव न्यूज़ से आगाज़ हुआ होता है, तो रीडर का रिस्पॉन्स एक अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा होता है, तो आगे वो नेगेटिव न्यूज़ को भी पढ़ने के बाद उसके रिस्पॉन्स में इतना ख़ास कुछ चेंज नहीं आता, चूँकि उसने पहले गुड न्यूज़ सुन ली होती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच है, इनडायरेक्ट प्लान है, लेकिन इसके थ्रू भी आप मैसेज, यानी आप डिफरेंट जो है
तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपका जो बिज़नेस मैसेज है वो निहायत मौसर हो। अब आप जो भी तरीक़ेकार अपनाते हैं, जिस तरह भी मैंने इनडायरेक्ट अप्रोच की बात की, तो बाज़ मैसेजेस में आपको इस तरह यूज़ करना होता है। इसी तरह जो नेगेटिव मैसेजेस हैं उसमें भी आप यकीनन इनडायरेक्ट अप्रोच का ही इस्तेमाल करेंगे। अब आप डायरेक्ट उन्हें अगर बैड न्यूज़ बता देते हैं, नेगेटिव न्यूज़ बता देते हैं, तो यकीनन रीडर का रिस्पॉन्स तो कुछ अच्छा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको एक तरीक़ेकार इस्तेमाल करना होता है और एक तरीके से एक अच्छा मैसेज जो है वो तैयार करना होता है और फिर भेजना होता है। पॉजिटिव मैसेज तो चूँकि है ही पॉजिटिव मैसेज, और उसमें तो आप डायरेक्ट अच्छी न्यूज़ जो है वो स्टार्ट में दे सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव मैसेजेस हैं उसके लिए आपको ठीक ठाक मैसेज को अच्छे तरीके से तैयार करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव मैसेज को भी आप अच्छे से तैयार नहीं करेंगे, आप तैयार इन तमाम तर मैसेजेस को बहुत खूबसूरती से करेंगे। उसकी वजह यह है कि तमाम तर मैसेजेस आपके ऑर्गेनाइजेशन के इमेज को खूबसूरत बना सकती हैं, तब जब आपका मैसेज इंतहाई मौसर होगा। अब अगर हम परसुएसिव मैसेजेस की बात करें, तो वो मैसेजेस हैं जो कि कन्विंस द रीडर टू टेक एन एक्शन, यानी कि आप जब ये मैसेज परसुएसिव मैसेज जब आप डिलीवर कर रहे होते हैं, तो आपका मकसद ये होता है कि जो आप कह रहे हैं उस पर रीडर जो है वो अमल करे। यानी कि इसकी अगर हम एग्जांपल दें कि एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उसका यही मकसद होगा कि ऑर्डर्स में इजाफा हो, बुकिंग हो, ऑर्डर्स तमाम जितने भी कस्टमर्स हैं वो बुकिंग करें, ऑर्डर करें, तो तभी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपने टारगेट और गोल्स अचीव करेगा। अब परसुएसिव मैसेज का यही मकसद। इसी तरह अगर कलेक्शन डिपार्टमेंट है तो उसका यही मकसद होगा कि बिल पे किए जाएं, और वो इसी तरह का मैसेज भेजेगा ताकि जो रीडर है वो उससे बिल पे कर सके उसे पढ़कर। इसी तरह और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, यानी कि आप अगर कहीं पर जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर आपका टीम लीडर है और कोई स्पेशल प्रोजेक्ट शुरू है, तो उसमें वो आपको एक्स्ट्रा टाइम काम करने पर फोकस करेगा और आपको कहेगा, तो वो एक ये परसुएसिव मैसेज हुआ। उसकी कोशिश ये है कि आप अमल करें जो वो आपको कह रहा है। अब कोई बंदा उस बात पर अमल क्यों करे? सवाल ये है कि आपका मैसेज जानदार होगा तभी वो अमल करेगा। अब उस मैसेज में क्या होना चाहिए? उसमें सबसे आम बात यह है कि आप रीडर को उसका फ़ायदा बताएं। जैसा कि अगर आपका कोई दोस्त आपको कहे कि आप फॉर्म भरें, एप्लीकेशन फॉर्म भरें जॉब वगैरह के लिए, तो उससे आपको जॉब मिल जाएगी, और इस तरह की कोई आपको बात करे जिसमें आपको बेनिफिट नज़र आए, तो आप बड़ी खुशी खुशी उस फॉर्म को फिल करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको उसके बारे में कोई खासियत का पता ना हो, तो फिर आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि आप उस फॉर्म को फिल करें। या तो पहले आप जो रीडर है उसको उसका फ़ायदा बताएंगे। उसको जब उसमें अपना फ़ायदा दिखाई देगा तो यकीनन वो फिर मोटिवेट होगा, फिर उसका रुझान जो है वो उस तरफ आएगा, यानी जिस अमल के लिए आप कह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं उसके हवाले से बात कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि रीडर जो है वो इस प्रोडक्ट को ख़रीदे, तो आप उसको जब फ़ायदा बताएंगे तभी वो उसको ख़रीदेगा। और सेकेंडली सर्विसेज की अगर बात हो, तो सर्विसेज तो अमूमन और भी बहुत सारी कंपनीज फराहम कर रही है, वो आपसे सर्विसेज क्यों ले? तो आप उनको बताएंगे कि क्या क्या, आप मुकम्मल डिटेल्स भी बताते हैं। सेकेंडली आप उसको उसके फ़ायदे के बारे में बताएंगे रीडर को, तभी वो मोटिवेट होगा। कहने का मकसद ये है कि ये तमाम तर बिजनेस मैसेजेस के हवाले से बात हो रही है कि बिजनेस मैसेजेस कितना अहम किरदार अदा करते हैं आपकी सक्सेस में, आपकी कामयाबी में बहुत अहम किरदार है इन बिजनेस मैसेजेस का। अब ये बिजनेस मैसेजेस अगर बेहतरीन हैं तो यकीनन आपकी कामयाबी से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन इसमें आपको तरीक़ेकार इस्तेमाल करने होते हैं। अब जो डिफरेंट मैसेजेस हैं तो उनके डिफरेंट तरीक़ेकार होंगे। अब आप एक ही तरीके को तमाम तर मैसेजेस में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब पॉजिटिव मैसेज है तो उसके लिए अलग तरीक़ेकार होगा, नेगेटिव के लिए अलग होगा। अब दो इकट्ठे मैसेजेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव,
آپ کے پاس دونوں نیوز ہیں اور ان کو آپ نے ایک ہی میسج میں بھیجنا ہے تو اس کا الگ طریقہ کار ہوگا. پرسویسو میسیجز ہیں تو الگ طریقہ کار ہوگا. تو ان تمام تر چیزوں کو جب آپ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے میسج کو ترتیب دینا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو میسج بھیج رہے ہیں وہ ڈفرینٹ کلچر کا ہو. آپ سے ڈفرینٹ کلچر کا ایک بندہ ہے جس کو آپ میسج بھیج رہے ہیں, تو اب آپ اس کو اپنے کلچر کے اکارڈنگلی تو میسج نہیں بھیج سکتے. آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے. جس طرح میں نے اس لیکچر کے آغاز میں کہا کہ ریڈر کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے میسج تیار کرنا ہے. آپ جب ایسا میسج تیار کرتے ہیں تو وہ بہت ہی افیکٹو بزنس میسج کہلاتا ہے. اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ریڈر سے پہلے کبھی نہیں ملے ہوتے, اس کسٹمر کلائنٹ سے آپ کبھی بھی نہیں ملے, تو وہاں پر آپ کی ریسرچ آپ کی مددگار ہوتی ہے. آپ کی ریسرچ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کے جو کسٹمر ہیں, کلائنٹس ہیں یا ریڈر جن کو آپ بھیج رہے ہیں میسج, ان کو آپ نے کس طرح کا میسج کرنا ہے. تو اس تمام تر چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. یہاں پر ایک اور اہم بات یہ آتی ہے کہ آپ کے بزنس میسج کا سٹارٹ اور اینڈ کیا ہے, کیونکہ فرسٹ امپریشن جو ہے وہ آخر تک رہتا ہے. یعنی جو فرسٹ میں سٹارٹ میں ایک ریڈر دیکھے گا تو یقیناً وہ فرسٹ امپریشن جو ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے, اور سیکنڈلی اینڈ جو ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. تو آپ کو جو اوپننگ ہے اور اینڈنگ ہے وہ نہایت خوبصورت طریقے سے کرنی چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سٹارٹ کیا ہونا چاہیے اور اینڈ کیا ہونا چاہیے. اگر ان کیس آپ کا بزنس میسج اوپن جہاں سے ہو رہا ہے اور اوپننگ پراپر نہیں ہے, جس طرح کہ ابھی ہم نے آپ کو کہا کہ نیگیٹو میسج اگر ہے اور آپ سٹارٹ میں ہی آغاز میں ہی نیگیٹو میسج دے دیتے ہیں تو یہ آپ کا ایک فیلئر بزنس میسج ہوگا. جہاں تک بات پازیٹیو میسج کی ہے تو اس کا آغاز آپ پازیٹیو سے ہی کریں گے, گڈ نیوز سے ہی کریں گے. آپ جب گڈ نیوز دیتے ہیں تو یقیناً جو ریڈر ہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جائے گی اور وہ خوش ہو کر ایک اچھے رسپانس کے ساتھ وہ میسج مزید پڑھے گا. اور اسی طرح اگر نیگیٹو نیوز آپ سٹارٹ میں ہی دے دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے مے بی وہ پورا میسج آپ کا پڑھے بھی نہ, اور ایک نیگیٹو امیج کریٹ کر لے اپنے ذہن میں آپ کی آرگنائزیشن کے بارے میں, تو وہ آپ کے لیے کافی حد تک نقصان دہ ہے آپ کی کمپنی کے لیے. تو اگر آپ نے اپنے آرگنائزیشن کا امیج خوبصورت پازیٹیو بنانا ہے تو یقیناً آپ کو ایک افیکٹو بزنس میسج بنانا ہوتا ہے. ایک آپ کو ریڈر کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے, اس کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق بنانا ہے. اوپننگ اینڈنگ پر آپ کو مکمل فوکس رکھنا ہوتا ہے, اور ساتھ میں آپ کو ایررز چیک کرنے ہوتے ہیں. جو ایررز ہیں ان کو ختم کرنا ہوتا ہے, غلطیاں نہ ہو. جو پراپرلی سٹینڈرڈز ہیں اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو یقیناً آپ کا بزنس میسج جو ہے وہ بہت بہترین ہوگا اور وہ آپ کی آرگنائزیشن کا امیج بہت ہی پازیٹیو بنائے گا. تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے میسیجز ہوتے ہیں. اب میسیجز جس ٹائپ کے بھی ہوں, آپ چونکہ اسے تیار کر رہے ہیں تو آپ کو یہ فٹ معلوم ہونا چاہیے کہ کس میسج کو آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے, اور آپ نے پھر اس کے بعد بھیجنا ہے, اور آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کے بدلے میں آپ کو ریڈر کی گڈ ول ضرور حاصل ہوگی. کیونکہ عموماً جو نیگیٹو میسیجز ہوتے ہیں جس میں کہ گڈ نیوز نہیں ہوتی ریڈر کے لیے, آپ بیڈ نیوز بھیج رہے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ کوئی فیوریبل رسپانس نہیں آئے گا, لیکن پھر بھی آپ کسٹمر کی گڈ ول کے لیے ایک اچھا میسیج ضرور کرتے ہیں تاکہ اس کے ذہن میں ہمیشہ آپ کے آرگنائزیشن کے حوالے سے ایک اچھا امیج رہے. گو کہ اس وقت میں اس کو وہ میسج ضرور برا لگے گا, لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ ایک اچھا میسج انہیں بھیجیں کہ جس میں بری نیوز تو ضرور ہے لیکن ایک میسج جو ہے وہ آپ نے بڑے پروفیشنل طریقے سے بھیجا ہے, تو اس چیز کو یقیناً وہ اپریشیٹ ضرور کرتا ہے. عزیز طلباء و طالبات, اب ہم چاہیں گے کہ نیوٹرل اور پازیٹیو میسیجز ہوں یا نیگیٹو میسیجز ہوں, پرسویسو میسیجز ہوں, یا پھر وہ میسج کہ جس میں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں نیوز موجود ہوں, ان کو آپ کس طرح سے تیار کریں گے. وہ کیا طریقہ کار ہوگا کہ جس کے تھرو آپ ایک میسج کو بہت افیکٹو بنا سکتے ہیں, ایک بہت ہی مؤثر بنا سکتے ہیں. تو ابھی ہم لیکچر میں آپ کو اس حوالے سے تمام تر ڈیٹیلز فراہم کریں گے. تو آغاز کریں گے نیوٹرل اور پازیٹیو میسیجز سے. So first we should know what is neutral messages. Some documents
such as routine requests or claims, contain neutral messages. In a message with neutral news, the main idea is neither positive nor negative. The sender of these neutral messages think the receivers will respond as requested. The receivers are not being persuaded to do something. So in neutral messages, we have two types: routine requests and claims. So first we should talk about routine requests. In a routine request, the sender asks for an action that will be done willingly. This type of request is presented in a direct order. For example, if you ask someone to speak at event, you need to provide the receiver with the details, the topic, the background knowledge, and expected size of the audience, date, time, and location of the presentation, the amount the speaker will be paid if appropriate, details about travel arrangements. In routine request, reveal the main idea only in the message, provide the necessary supporting details concisely, close in a polite, helpful manner. The plan is used for routine request. Uh, Main idea: state the request politely and directly and provide the reason for the request if appropriate. Details: provide the information required to obtain a complete response, such as time, dates, benefits to receiver, and terms of payment. Closing: end pleasantly and indicate the action the receiver should take. The second one is claims. A claim is a message that requests a refund, an exchange, or a discount or merchandise or services. Customers and clients use a direct order in claims to communicate to the receiver that they expect an adjustment. A positive settlement to a claim. Main idea: ask for an adjustment. Details: explain the problem or the reason for the request and identify the damage if damage occurred. Closing: end with a positive statement and indicate how to correct the situation. Dear students, a claim message should have a positive but firm tone. Claims may be submitted using email or an online form as well as by letter. Dear students, now moving to the next topic in writing to clients and customers, and the next topic is writing positive messages. A receiver will react favorably to a message that contains positive news. Examples of documents that contain positive messages are orders, positive response to request, friendship messages, and acknowledgement. For those messages, use direct order. Uh, for example, main idea: say yes to the receiver. Details: provide information the receiver needs to carry out specific instructions. Closing: end with a helpful positive closing. If the sender sells goods or services, the closing may contain a soft sell. First, we should talk about the orders. Companies usually place an order by using a form called a purchase order. Occasionally, a small company or an individual will use a letter or email to place an order. Please send me is the main idea of an order. Provide complete supporting details to ensure that an order will be filled correctly and to avoid wasting time and money. For each item ordered, indicate the stock
number or catalog number, a description including the size and color if applicable, quantity, order, unit cost and total cost, method of shipment, buyer's name and shipping address, method of payment. In an order formatting, the middle paragraph as a table can be helpful. Use direct order in this type of message, like main idea asks the receiver to fill the order details, supply specific information needed by the receiver, closing, and with a statement indicating the action the receiver should take. The next is positive response to a request. A positive response tells the receiver the sender is saying yes to a request. Direct order is used for positive responses. If the sender is a business, the closing may include a soft sell. For example, main idea, give a positive response to the request, details, provide necessary information so the receiver knows what the sender is offering and expects. Also make necessary request, closing, and with a courteous positive statement and possibly a reminder of any action the sender wants the receiver to take. The next is Goodwill Messages. Dear students, a goodwill message can be an acknowledgement or a friendly message designed to build relationships. Effective goodwill messages help increase the receiver's positive feelings toward the sender. Goodwill messages may express congratulations, sympathy, welcome, or appreciation. The next is friendship messages. A friendship message says non-verbally to your receiver, I want a positive relationship with you. This type of message may or may not need supporting details. For example, when expressing sympathy, details are not appropriate. Yet, details in an invitation are important. The receiver needs to know who is invited, when and where the occasion will be held, and how to dress. And the next is acknowledgement. An acknowledgement is a message that tells a sender that a message or item has been received. The objective of an acknowledgement is to maintain or build goodwill. The next topic in writing to clients and customers is writing negative messages. Many situations call for messages that contains negative news. Some messages containing negative news and need special attention. They are messages that deny our request and a message that refuse credit. So first we should talk about denying a request. In a request denial, you are saying no to another person's request. The reasons for declining a request are an important aspect of this type of message. The success of the message depends on whether the receiver judges the reasons to be valid. And the second is refusing credit. A credit refusal is a message that denies credit to an applicant. Credit may be refused for several reasons. The credit application may contain incomplete details or lack credit references. The applicant may already be in debt, behind on payments, or have insufficient income to want a loan. If credit must be refused, the receiver has a right to know why. The sender should explain the reasons tactfully. The goal is to refuse credit but maintain the person as a customer. Dear students, the next is writing messages.
with both positive and negative news. Once in a while, you may have to write a message that contains both positive and negative news. The steps for planning that type of message are the same as for other messages. However, in these situations, you will have two main ideas instead of just one. The positive news is the first idea, and the negative news is the second. When organizing these messages, use indirect order with the good news as the opening. अजीज तलबा तलबात, इस तरह की सिचुएशन में आपके पास एक नहीं बल्कि दो आइडियाज़ मौजूद होते हैं. नंबर वन, the positive news in the first idea and the negative news in the second idea. Dear students, now moving to the next topic in writing to clients and customers is persuasive messages. Persuasive requests are common in the business environment. They might be sent from one employee to another or from an employee to a customer or supplier. Dear students, two special kinds of persuasive messages are sales messages and collection messages. First, we should talk about sales messages. A sales message tries to persuade a potential customer to purchase a product or service. Like other persuasive message, it involves gaining the reader's attention. The message should establish a need and show how a product or service will meet that need. Supporting details and an easy way for the reader to respond should also be included. A sales message might appeal to readers' senses by describing how something looks, sounds, feels, smells, or tastes. Now, the second is collection messages. The purpose of a collection message is to persuade a customer to pay a past due bill. Collection messages have four stages. The first is the reminder stage, the strong reminder stage, the discussion stage, the urgency stage. The reminder message assumes that the customer has simply forgotten to make a payment. Now we are moving to the planning proposals. Proposals are another type of persuasive writing. A proposal is a formal document that describes a problem or need and recommends a solution. The writer establishes a need and tries to convince the reader to meet that need by taking a specific action. Proposals may be internal, such as from an employee to a supervisor. Proposal may also be external, such as from a consulting firm to a company. And now, dear students, we are talking about organizing and writing proposals. The organization and content of a proposal will vary depending on what you are proposing. Most but not all proposal contains the elements introduction, background, need, scope of project, action plan, schedule, cost, qualification, call for action, and supporting information. Introduction briefly summarize what you are proposing, what your proposal will accomplish, and what types of information are included in your proposal. Immediately begin to stress the benefits to the receiver. Background. In this optional section, you might describe the events that led to the current situation, such as changes in the company structure or in a product line. And in need,
From the receiver's point of view, describe the problem that your proposal will solve or the need it will meet. In scope of project, outline your plan or solution to meet the need. And in action plan, list the steps that must be taken to carry out your proposal. The next is schedule. Schedule discuss the amount of time needed to complete the project and the deadline for each step in the action plan. In cost, explain the proposal's total cost and link the cost to the benefits the reader will receive. Qualification, describe your own qualifications if you will carry out the proposal personally or those of your company. And in call for action, just as in a persuasive message, and with a specific request for a receiver to do something, such as scheduling a message to discuss your proposal. The supporting information include any necessary supporting information such as the names of references. Dear students, in today's lecture we talked about neutral messages and persuasive messages, and unit number 8, neutral and persuasive messages, lecture part 1, course code 8410. Inshallah, we will discuss remaining topics in next lecture. Dear students, thank you very much. Now we will meet in next lectures. Till then, Allah Hafiz.